Hello, hey everyone. Hello, hello. So, hello. So, good evening. कैसे हैं आप सब? तो, my name is Akash Avasthi and I am actually IEEE PES chairperson. And right now I'm working as an electronics engineer in Inochi Care Private Limited. So, यही है मेरा इंट्रोडक्शन. So, guys, here we are to discuss career option for triple E students. So actually I was checking my mic so that मतलब आवाज़ वगैरह आ रही है तो and it's quite working good. So आप लोगों को भी आवाज़ मेरी साफ़ आ रही होगी and I wish कि आप लोग ये सेशन एंजॉय करें एंड इसे फुल्ली यूटिलाइज़ करें ताकि मैं जितना आपको मतलब जितनी बातें आपको बताऊँ वो सब आपके आप उसे कभी कहीं न कहीं किसी न किसी के को यूटिलाइज़ करें और साथ में किसी न किसी को और मतलब बताएँ ऐसे ही बातें क्योंकि knowledge is all about give and take. So I think I should start now. And so first of all, so as this is your quarantine period, so सब लोग घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन है और बैठना भी पड़ेगा. तो why don't you utilize this time to make the better version of yourself? According to me, it is the best time to utilize yourself. आप अपना फुल पोटेंशियल सिर्फ एक काम पे लगा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग. क्योंकि ना तो आपके पास अभी कॉलेज का बहाना है, ना भी आपके पास आपके पर्सनल मैटर्स इतने मैटर करेंगे क्योंकि बाहर आप जा नहीं सकते. तो अभी आप ये जो आपके पास टाइम है, हाउ विल यू फुल्ली यूटिलाइज़ दैट सो दैट यू कैन मेक अ बेटर वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ? I know most of you guys are preparing for the exams as well as doing something creative works. So, first of all, I would like to take your attention towards the COVID-19 इफेक्ट ऑन योर कोर जॉब्स. एज ट्रिपल ई एक जो ब्रांच है वो कोर ब्रांच है. सो एज वी नो ट्रेड्स आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल रिसेशन एंड इट विल अफेक्ट ऑन जॉब्स एज वेल एज फॉर द न्यू कमर्स ऑफ इंडस्ट्री और जो अभी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा है. सो देखा जाए तो अभी कोर जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और उसी को हमें कॉप अप करना है. हम वो कॉप अप कैसे होगा? वो कॉप अप होगा हमारी स्किल्स से, हमारी एबिलिटीज़ से. अब वो आपकी स्किल्स इंटरपर्सनल एज़ वेल एज़ इंट्रापर्सनल. सो अभी आपको देखना पड़ेगा कि आप ये कैसे जो आप अपनी स्किल्स कैसे एनहांस करेंगे. तो स्किल्स आप कैसे भी कर सकते हैं. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ इंटरपर्सनली करें कि आप कोडिंग देख रहे हैं या फिर कोडिंग तो आप करोगे ही नहीं एज़ यू आर ऑफ ट्रिपल ई. सो नहीं कर सकते हो वैसे, ऐसा मना भी नहीं है, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल अगर आप कोर की तरफ आपका मतलब कोर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है तो यू विल नॉट प्रेफर कोडिंग एज वेल. सो यू शुड फोकस अबाउट द कोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोर इलेक्ट्रिकल to get a better job. So, talking main about the electrical sector, our solar sector is mostly dependent on China due to low cost solar panels, which will affect Indian market badly. And ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
हमारे जो हम लोग जो सोलर पैनल बनाते हैं वो कॉस्ट ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। सो अभी अगर देखा जाए तो हमारी जो सोलर मार्केट है वो इस टाइम इंडिया में ऑन ग्रोइंग है। जो सब अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ हैं, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स सोलर पावर मोर एंड मोर। इलेक्ट्रिकल क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल तो डायरेक्ट तो सप्लाई है नहीं। ऑल्दो आवर गवर्नमेंट इज़ वर्किंग very fast to supply the main electricity to the rural households, but still it will take some time. So our solar sector is on boom right now, but right now why the ordinary people are able to buy that solar? Because चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा था। सो चाइना से हमें कॉस्ट तो लो मिलती है, एंड वी आर इंडियंस, वी ओनली डिपेंडेंट अबाउट द कॉस्ट मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दैट्स व्हाई हमारे सोलर सेक्टर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, विच विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द जॉब ऑफ द इलेक्ट्रिकल वंस, विच विल बी गोइंग आउट इन फ्यू कमिंग ईयर्स ऑफ द मार्केट। सो और ये अभी फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ही अफेक्ट करेगा। And according to me, market is stocked up, but due to deficiency in currency flow, we will face this demand supply recession. Right now, as of now, like we have stock, but right now there is a deficiency in currency flow. Like we don't want to spend the hard cash on something, and most of in our rural and suburban areas there is the currency flow with the use of cash, not using digital payments like e-payments or anything. So that's why this will affect on the main jobs of the core or non-core as well as. So what to do? I know you guys are asking about with me that how what to do, and I'm asking with you. It's like चेन चल रही है, आप मुझसे पूछो मैं आपसे पूछूं, लेकिन खैर चलिए आगे देखते हैं। सो एज एन ट्रिपल ई स्टूडेंट, आई डोंट नो आपने फोर्सफुली ली है या आपकी रैंक की वजह से आपको ट्रिपल ई मिली है, बट जैसा भी है, बट अब आप ट्रिपल ई में हो तो यू हैव नो अदर ऑप्शन देन सर्वाइविंग दिस ब्रांच। सो सर्वाइव, एंड एज एन ट्रिपल ई स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मी यू हैव थ्री ऑप्शंस। आई नो आपके हिसाब से आपके पास ज़्यादा भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से आपके पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ all, stick to core, means memorize the concept and crack gate. This is all about like you have to memorize your second and third year concept, also about first year like ET, electrical technologies, and many more. I don't remember right now. So you have to memorize all those concepts and then apply to the questions, and then solve the gate level question and to crack gate. So make better, make better and compete with yourself every day. So we all know that the gate is not everyone's cup of tea, because I know it might be hard, like कॉन्सेप्ट पढ़ते रहना फिर उन्हें अप्लाई करना मुश्किल होता है, कई बार मुश्किल होता है। सो कोई नहीं, आपके पास और भी चांस है, आपके पास और भी काम है, मतलब आप और भी फील्ड्स हैं। एंड सेकंड इज माय मोस्ट फेवरेट, दैट हैशटैग धर्म परिवर्तन। सो धर्म परिवर्तन को कैसे समझाया जाए कि मीन्स हेड टुवर्ड्स सीएसआईटी इंडस्ट्री और सेल्स और मार्केटिंग। और इसके अलावा धर्म परिवर्तन और भी तरीके का हो सकता है, लाइक इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब प्रॉपर, देन आप कहीं भी जा सकते हैं, मीन्स इवन दो फार्म मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं, बट या तो धर्म परिवर्तन बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रिपल ई स्टूडेंट को लिया जाता है वो सीएसआईटी इंडस्ट्री कंज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज दे नो दे हैव कैपेबिलिटी टू हायर देम एंड टू फीड देम फॉर ईयर्स। सो लाइक ये सेकंड ऑप्शन है। एंड थर्ड ऑप्शन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, मतलब अगर आप अपने अंदर ये मतलब चीज़ एक एक वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, एक आर्ट, इफ़ यू ग्रो दिस आर्ट इन योर सेल्फ, देन दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर फ्यूचर प्लान, फॉर योर करियर प्लान्स। लाइक बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर गाय, try to analyze, not memorize. I know the gate will all about the memorization, like the more you memorize, the more you will score in the gate. But what about analyzation? Like we are dealing with the different problems in our present scenario. Like right now as COVID-19, we need a electronic dispenser of sanitizer. So why don't we prepare the product like that so that we can deploy it anywhere, and
then can gain attention towards our work. So, and learn how to tackle the real world problems. Focus on the competitive learning. And I'm not saying that competitive learning about those like you have to compete with others. You have to compete with yourself only. Make a better version of yourself. Like आप हमेशा जो भी एक दिन पहले करें, आप अगले दिन खुद को उससे ज़्यादा एक लेवल अप ले जाने की कोशिश करें. And all this, I know it's a vague line, but like innovation plus learning will lead towards a better future than other things. So as we have required the Google filled forms like technology jobs in demand. बहुत बच्चों ने पूछा था कि टेक्नोलॉजीज जॉब्स इन डिमांड कोर इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है. तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कोर इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं अपने एक्सपीरियंस से जाऊंगा. तो व्हाट लाइक servo stabilizer is basically like the common stabilizer, but it is the automatic stabilization of the current flow or electricity flow. So आप इसमें कोर स्टडी और इम्प्लीमेंटेशन आती है आपकी. लाइक आपके जो बेसिक ट्रांसफॉर्मर्स थे, लाइक जो आपके ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स थे, वो सब आते हैं इसमें. तो आप इसमें जा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी ब्रांच है. और इवन दो ये मार्केट अभी चल ही रही है, मार्केट में है ये चीज़ अभी. सो आप इसमें जा सकते हैं ना, अपना करियर को थोड़ा सा बना सकते हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत बना सकते हैं. कोर की जॉब रहेगी, यू विल नॉट लाइक, आप ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे, सब आपको आता होगा. अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज टेलीकॉम सेक्टर. सो वी नो वी आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एज वेल. We will study the communication system as our subject, like what is it called, मतलब ज़रूरी subject होगा वो. So you have to focus on those things as well, like AM FM, or there are many things like signal modulation and everything about that. So you should focus about that also, like if you want to go on the telecom sector. And एक बात टेलीकॉम सेक्टर की ये है कि आपको काफ़ी चीज़ें उसमें मिलेंगी, और काफ़ी चीज़ें मतलब टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अपने आप में ही इवॉल्व हो रहा है. मतलब 4G 5G एंड मतलब मैनी ऑफ द थिंग्स. और इवन दो कई LTE बहुत सारी जो भी ब्रांचेस हैं वो सब टेलीकॉम सेक्टर के अंतर्गत ही आएंगी. और आप लोगों को उसमें अगर जाना है तो यू हैव टू बी conceptually strong on the field of communication systems, which will be taught to you in approximate third or fifth semester. I don't remember exactly how. So this was the second, which was according to me it's in demand. So third thing is smart energy monitoring and distribution. It is also a hot topic, like R&D in power distribution and management system. अभी ये इंडिया में नहीं है, इतना इंडिया में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट एज ऑफ नाउ द ग्रोइंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, हम इसे अडेप्ट बहुत जल्दी करेंगे. और वी नीड द परफेक्ट इंजीनियर्स टू हैंडल द प्रॉब्लम्स विच विल अराइज इन फ्यूचर. सो आप लोग अगर इसमें अभी से अपने आप को तैयार करना चालू करेंगे इन स्मार्ट एनर्जी मॉनिटरिंग में, सो दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर. लाइक अगर आप इसके बाद कभी किसी मतलब PSUs में अगर आपको मिल जाता है, तो आप उसमें जब स्मार्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पे वहाँ पे ज़रूर R&D हो रही होगी. सो आपको वहाँ पे एब्जॉर्व किया जा सकता है, जिसमें आप अपनी भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं. और एक होता है ना कि इम्प्लीमेंटेशन से कुछ नया बनाना, तो वो आप कर सकते हैं. एंड फोर्थ थिंग अबाउट द हैंडलिंग मैनेजिंग एंड मेकिंग सर्किट यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट. आई वुड रियली सजेस्ट दैट दिस इज अ एवरग्रीन ब्रांच. लाइक power electronics is like it will not end. And even though the design engineering of this power electronic circuit will paid well by the market. So if you have the capability to deal with the power electronics equipments, then you should be a PE engineer. And first of all I would like to gain your attention towards the metro हर जगह हो रही है. मेट्रो का फ्यूचर ही फ्यूचर है. इवन दो अभी फ़िलहाल ये मेट्रोज हैं, एंड द रैपिड मेट्रोज एंड अदर थिंग्स, वो भी अभी जब अपना विस्तार करेंगी
तो उसमें आपको आपकी ज़रूरत होगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। एंड द मेन थिंग इज़ अबाउट द ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी पीई की सारी ज़रूरत है, क्योंकि हम अपना जितना कॉम्पैक्ट रख सकते हैं सिस्टम, हम उतना कॉम्पैक्ट रखेंगे। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यही फ़ायदा है कि हम उसे, जो सर्किट होता है हमारा, हम उसे काफ़ी बाइंड अप कर देते हैं। काफ़ी बड़ी, जो बड़ा काम होता है उसे भी हम छोटे सर्किट पे ला सकते हैं यूजिंग विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। So I would like to suggest you this also the technology in demand right now in core electrical. And MATLAB simulation, evergreen, used by the researchers to analyze the data. You can be a project assistant under a professor, or anyhow any organization, if someone is doing research and he or she has the data to compile and to analyze the result by that data. So you must need a software, and which is the MATLAB, which is preferred by most of the industry personals and also the professors of many big institutions. So, and this is also a bright branch. I have the few, this is the branch which has the bright future. And also PLC and SCADA. So PLC and SCADA, I know most of you are familiar with that, like programmable logical controller, and SCADA is also simulation software. So industries are equipped with this. Like you just need you just need to make yourself familiar with how to use it. Learn PLC programming and SCADA structure. PLC programming is basically the ladder type programming, ladder structure based programming. So it is basically, इसमें भी सारी सारी बात आती है आपके लॉजिक पे। आप लॉजिक कितनी जल्दी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे मोटर चलानी है एट द सिक्वेंशियल टाइम, तो आप कैसे वो लॉजिक बिल्ड करेंगे, वो आपका मेन मेन मोटो होना चाहिए। तो ट्राई टू एनहेंस योर लॉजिकल स्किल्स इन द इंटरपर्सनल स्किल्स। सो पीसीबी डिज़ाइन एंड सर्किट डिज़ाइनिंग, highly commendable if you want a desk job, and pay scale as well as evergreen, both are good enough। मतलब पे स्केल एज वेल एज एक बैठे बिठाई वाइट कॉलर जॉब। एंड बट पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है हमें, क्योंकि right now the culture is of layered PCBs. We have not to print a PCB on a single structure. We have to prepare it layered so that it can be fit into a compact equipment as well. So that's why try to learn in the layered structure of PCB designing. So and another thing is renewable sector। वो तो हमेशा ह्यूज मार्केट है, लेकिन बस अभी थोड़ा सा आ सकता है रिसेशन ड्यू टू दिस कोविड-19, बट इट विल अगेन बूम। सो यू शुड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, embedded systems. I mean, it is the most in demand right now. So talking about embedded systems, like it is growing market in India, a sector where innovation meets brilliant minds. And talking about the brilliant minds are everywhere। You have also a brilliant mind, लेकिन अभी आपने उसको उस वे में यूटिलाइज नहीं करा है। जिस दिन आप उसको उस वे में यूटिलाइज करना चालू कर देंगे, उस दिन आप भी अपने आप को एक ब्रिलियंट माइंड की तरह मार्केट में देखने लगेंगे। सो एम्बेडेड सिस्टम यार बेसिकली एक वो भी फ़ायदा है कि ज़्यादा हाई वोल्टेज पे काम नहीं करना होता इसमें। वी कैन सस्टेन आवर लाइफ एट अ लो वोल्टेज easily. So main attraction which I would like to tell that you will work in a cross domain, like to deal with electronic equipments as well as programming too. Like you have to deal with the electronics equipment, mostly with the electronics equipment, and even if you have to deal with the electrical equipments, then it will be the small transformers like 220 to 12 volt, so it will be the small transformers। so आपको काम दोनों पे करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पे और उन्हें प्रोग्रामिंग पे भी। तो आपकी एक साथ दोनों स्किल्स एनहेंस कर हो रही होंगी। आप साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के बारे में भी पढ़ रहे होंगे, और साथ साथ उसे कैसे इफेक्टिवली हम प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे उसमें हम और ज़्यादा अच्छा अच्छा कर सकते हैं। तो आप दोनों काम उसमें एम्बेडेड सिस्टम में कर सकते हैं। सो फॉर दिस अ नीड विच यू मस्ट पोजेस इज अडेप्टेबिलिटी, means flexible to work in cross domain and eager to learn। flexible to work in cross domain is the most of the thing। like हम कभी कभार क्या सोचते हैं कि यार हम इलेक्ट्रिकल से हैं, हम किसी और ब्रांच का काम क्यों करें, वी आर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट काम करो,
नॉट फोकस ऑन द कि इलेक्ट्रिकल का काम है या सीएस का काम है या मैकेनिकल का काम है, यू विल लर्न फ्रॉम इट समथिंग, आपको सीखोगे ही, और जो आप अभी नहीं तो आगे कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करोगे, एंड देन यू विल रिकॉग्नाइज द need of that particular activity which you have done in your past. So these are the embedded system, and I would like to, being an electronics engineer, I can suggest you ways how you should approach toward the embedded system. So learn about basic microcontrollers like Arduino, Node MCU. These are the basic microcontrollers in market and easily available at a cheap price. So you can make a simple prototype on that and then can enhance your skills over these microcontrollers. And I would like to suggest which you will first work with language which when you enter in the field of the embedded system is embedded C, which will be programmed in Arduino IDE, and also a Python, a little bit Python, not a bunch of Python. You have to use a little bit Python. So ये दोनों काम आप अगर एम्बेडेड सिस्टम्स की तरफ आप जाना चाहते हो, एक थोड़ा सा इंसाइट अगर आप लेना चाहते हो फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, तो आई वुड सजेस्ट यू मस्ट ट्राई दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वालों को तो वैसे भी अभी काफ़ी टाइम है मार्केट में आने के लिए, तो हर फील्ड को देखो कि यहाँ से क्या गेन कर सकता हूँ, यहाँ से क्या गेन कर सकता हूँ, यहाँ से क्या गेन कर सकता हूँ, एंड आई कैन बेट दैट इफ यू विल स्टार्ट दिस योर जर्नी टुवर्ड्स एम्बेडेड सिस्टम, you will surely learn this and will love this. So start doing projects on a small level. I would personally recommend that try to cope up with the problems that you are generally facing, like during this quarantine period one must need a automatic sanitizer dispenser and many more. And also you can make something different like home automation or any automatic doorbell or RFID systems, and try to deploy those projects in college or home to get appreciation. क्योंकि यार अगर फ्री में कर रहे हैं तो कम से कम नाम बनाना तो बनता ही है ना। तो जस्ट लाइक जाओ करो उसे, क्योंकि अभी आप एक लर्निंग फेज में हो, तो लर्निंग फेज में अभी आपने खुद खर्चा करा और आप खुद अभी उसे बेटर बना रहे हो, तो उसे कहीं दिखाने की भी कोशिश करो, एंड ये आपको दो बेनिफिट करेगा, एक तो आपका नाम, आपकी लर्निंग रहेगी पूरी, एंड और आपको एक नया इंसाइट मिलेगा कि यार मैं इसे और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा जो यूज़र फीडबैक होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. So when it will be used by some of your fellow mates or some your parents or anyone, he or she will surely give you the reviews about that what you have make, and it will cheer you up. Like अगर आपने अच्छा बनाया होगा तो वो अच्छा कहेगा, अगर आपने बुरा बनाया होगा वो तब भी उसे अच्छा कहेगा, क्योंकि इफ अभी आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो, यू आर इन योर लर्निंग फेज, सो just do that, and then using that user reviews, try to implement the new ways how to deal with those problems which were told by the user. So one thing which I would like to mention, that convert your project into a prototype, sorry यहाँ project लिखा है माफ़ी, which can be remotely accessed. Like the main thing which is right now in the market is cloud computing or cloud monitoring. You have also heard about that. हम जो इलेक्ट्रिकल एप्लियांस हो रहे हैं, हम उन्हें भी रिमोटली एक्सेस बनाना चाहते हैं. Who wanna go to turn off a transformer or auto transformer in the afternoon? So everyone wants their free time. So that's why सब लोग रिमोटली एक्सेस चाह रहे हैं. तो अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाओ तो उसे कैसे भी करके उसे एक बार ट्राई करो कि आप उसे क्लाउड से कैसे कनेक्ट कर सकते हो और कैसे उसे क्लाउड से कंट्रोल कर सकते हो. So I have given two examples like ThinkSpeak or Blink or any other cloud platform. There are many cloud platforms. So you can use that and आप उसे बनाओ and implement करके देखो, कुछ ना कुछ अच्छा ही रिव्यू मिलेगा आपको. And one major suggestion is that don't keep yourself bounded in college life or personal life. I would suggest that not keep yourself in always in college, like हमेशा कॉलेज में ही हैं हम. ये समझ नहीं आती मुझे बात. आई एम नॉट सेइंग दैट बंक योर क्लासेस, ओके, आई एम नॉट सेइंग, मार्क माई वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग दैट बंक योर क्लासेस. सो आप कॉलेज जाओ, कॉलेज में पढ़ो, टीचर आपको मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल
आप उसको लेके एकदम टेंस मत रहो कि यार नहीं आज ये है, आज ये है। आप जो अपने काम कर रहे हो, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट हो, इवन दो इफ यू आर बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, you can also go in the CSIT domain as well. So if you are learning a programming language, then focus on that also, and more focus on that also. Like divide in a ratio of 60-40. 40% about the class, it is important, but 60% about growing your interpersonal skills. Like आप अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाओगे, किसी भी डोमेन में आप जाना चाहते हो, आपका कोई एम होगा, तो उस एम को अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, सो फोकस ऑन दैट. एंड सेकेंड थिंग अबाउट द एक्सप्लोर योर सेल्फ इन इंडस्ट्रीज, लाइक डू इंटर्नशिप्स. इंटर्नशिप्स करना यार मेरे हिसाब से ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है. क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि यार थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करेंगे ना. एज ऑफ नाउ आवर AICTE सिलेबस इज सेइंग लाइक यू हैव टू डू द इंटर्नशिप इन द थर्ड ईयर समर वैकेशंस. सो नॉट फोकस ऑन ओनली दैट वे, नॉट ओनली दैट पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक हम क्यों ही थर्ड ईयर में करें, और थर्ड ईयर में एकदम से तो कोई मार्केट अभी फिलहाल एक तरीके से स्टार्ट तो कर नहीं रही है कि they will absorb you as you will graduate. So you have to make yourself capable to the market now. So I would personally recommend that do internships. It will tell you the level of the market and level of you, so you can compare like what I have to do to become the capable of to the market. So and join and get a role on projects. Like आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करो टीम के साथ करो, या किसी सोसाइटी में, आप जैसे कॉलेज की सोसाइटी होंगी या फिर किसी और कॉलेज की सोसाइटी होंगी, कुछ भी हो सकता है वो. सो गो विद दैट एंड गेट अ रोल. दिस विल एनहेंस यू द टीम वर्किंग कैपेबिलिटी. एंड टीम वर्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. कई बार बंदे में स्किल होती है लेकिन उसमें टीम वर्किंग कैपेबिलिटी नहीं होती, दैट्स वाई वो सफ़र करता है मार्केट में. तो टीम वर्किंग, क्योंकि टीम में जब आप काम करोगे आपको कई बातें किसी की अच्छी लगेंगी, कई बातें किसी की नहीं अच्छी लगेंगी, आपको वो माननी पड़ेंगी एक बार को. तो दिस विल एनहेंस यू दिस योर इंटरपर्सनल स्किल. एंड अटेंड वेरियस टेक्निकल वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स. या टेक्निकल वेबिनार्स या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, और इवन दो मेरा ये वेबिनार सुन नहीं रहे होंगे वो लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं, बट ये टेक्निकल वेब ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि कई बार हम नहीं जानते कि मार्केट में क्या चल रहा है, बट जो अभी वेबिनार्स में होगा वो 1 घंटे का होगा, आई नो, बट इट विल गिव यू इनसाइट अबाउट दैट कि अगर हम इसमें कभी आगे जाते हैं तो ये हमें मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमारे पास होना चाहिए ना कि हम क्या करेंगे आगे. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर एज वेल. सो एंड पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स, लाइक कंपटीशन एंड कंपटीशन खुद से ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि पहली हैकाथॉन कोई जीत के नहीं आता, बट हाँ यू कैन लर्न फ्रॉम योर लास्ट फेलियर. ओके, सो एंड कन्वर्ट इन योर नेक्स्ट विन and be a good and fast learner. So at the end I will say that believe in yourself and don't compare yourself with others. मतलब किसी को, मतलब अपने आप को, मतलब किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि आप खुद में यूनिक हो. आप किसी और के बारे में सोच के अपने आप को लो फील मत कराओ कि यार नहीं यार वो ऐसा है वो ऐसा है. नहीं, क्या पता आपके पास जो क्वालिटी हो वो किसी के पास हो ही ना, बस अभी आप उसे पहचान नहीं पा रहे. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ट्राई टू एनहेंस योर स्किल्स. हर फील्ड में छोटा पार्ट लो, एंड देन यू विल यूजुअली easily grab the opportunities in your particular field. So and be your own opponent. अपने ही अपोनेंट बनो, किसी और के बनने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल. जब बनेंगे तब बहुत हो जाएगा हमारे पास, अभी खुद के अपोनेंट रहो. And one thing which I left about this in this webinar about the session, about the opportunities in the electrical vehicle domain, EV domain. It is also a growing market in the India. आप देख ही रहे होंगे हर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और हर कोई जितने भी हैं सब लोग फोकस ऑन ऑल्सो ईवी चार्जर्स, लाइक ईवी चार्जिंग स्टेशंस. अभी ज़्यादा उसकी भी डिमांड आएगी. इवन तो बेंगलोर में आप देख भी रहे होंगे, अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहते होंगे, कि बेंगलोर में ईवी चार्जिंग स्टेशंस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, कि कैसे हम जो भी हमारे ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं उससे कैसे हम ऐसा कर सकें कि वो फास्ट चार्जिंग करें. एंड दोज विल डिपेंड ऑन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एज वेल. याद रखें मेरी बात की, वो जो मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन बताया था वो उसी में आएगा
क्योंकि ये ईवी चार्जिंग स्टेशन आर द मोस्ट लाइक ईवी बना देगी कंपनी, बट द चार्जिंग स्टेशन आपके उस पे रहेगा, आपके एंड पे। तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर वर्किंग ऑन इट। आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू दैट join those startups, apply for those startups, and do let me know if you have any query about that. And also आप आप जो भी करें अच्छा करें। And now thanks, and this is the end of the video. And if anyone wants to ask any questions, so now he or she can ask in the comment section. I'm reading this. So as of now, Shobit Quatra is saying that I am following Dham Parivartan. It's good. You have decided your role in the industry. So Dipanshu, I am an application specialist in medical branch. मैं B.Tech कैसे करूँ? So okay, that's good. You are the application specialist, and you have the command on the MRI and CT scan. So you can go with that. And Hardik Jain is asking about how C different with embedded C. Okay. This is the difference in the syntax basically. This is not the difference in the logic. If you have the logic, then you are good enough to do that. But the difference is in the syntax. So निखिल दुबे, सॉरी सर अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, आई नो मैं गलत बोला हूँ। सो एंड आकाश गुप्ता, ओके। So let's end this session, and then do let me know if you have any query on the context given in the description. Thank you so much. All the best for your future.